Hi, class. Hello, everyone. So, welcome to Super Grads. I'm your English mentor, Sana Jaffrey, and I welcome you again to the Hindu Editorial Analysis. So, how have you been? Hunky dory? All good with you? Wonderful. तो चलिए ठीक है आज का हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नाउ ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट the entire editorial page was flooded with the news on rather opinion articles on the budget. The union budget is the highlight, and I would suggest that you must really apprise yourself rather of the latest development regarding the budget, right? There will certainly be some questions asked on budget in case you are targeting other examinations. Regarding IPMAT, it's still a very good idea to know about the Indian economy, to study budgets. These are very important things. So, all the pieces today were actually based on budget, its implications, its criticism, its limitations, right? So, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पहले बजट को अच्छे से खुद से स्टडी कर लें और अगर ना भी कर पाए तो एडिटोरियल में आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा फाइन सो कमिंग टू द फर्स्ट वन मैंने अभी पहला पिक किया है यूनियन बजट 24-25 ठीक नो साइंस ऑफ लर्निंग दूसरा मैंने पिक किया है a convoluted approach to job creation. Okay, so let's first of all start with the first one because it was more comprehensive. And while the second one was only talking about the approach adopted in this budget for job creation, but the first one was more comprehensive, the entire budget. So I picked this up, right? Union Budget 24-25, no signs of learning. Hi Yuvraj, hi PRX, hello Storm, how are you guys? Okay, तो चलिए start करते हैं इससे. Just before Nirmala Sitharaman presented her seventh consecutive budget as Union Finance Minister of a coalition led by BJP, which managed to gain power for the third time on an underwhelming mandate. Signals from the government seem to suggest what its thrust may be. So, looks like a good start. It tells you about that. It's for the seventh time that Nirmala Sitharaman has presented the budget. Seventh consecutive या consecutive British English में बोलेंगे consecutive American English में one after the other, right? So the seventh time in succession that this has been presented, coalition government, you already know about it, BJP जो जिसको underwhelming mandate मिला. Hi Priya, how are you? Underwhelming mandate. अब कोई चीज underwhelming है उसका क्या मतलब है? It's slightly less than expected. Something is unremarkable, not very good, not up to the mark. ठीक है, so it's unremarkable. It's therefore slightly disappointing. और इस बजट से we got clear signals about what the government's thrust is. What is thrust? Thrust is, focus on something or emphasis on something. ये गवर्नमेंट किस चीज पे एम्फसाइज कर रही है क्लियरली हमको देखने को मिलता है. The Economic Survey 23-24 made clear that while India's industrialists and business elite was swimming in excess profits, the priority of the government was not to tax away that excess for developmental purposes, but to ease the burden of regulation on business and goad the private sector into generating productive jobs out of enlightened self-interest. So, looks like a very good thing. फाइन सो द आइडिया हियर इज दैट ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था उसमें भी क्लियर हो गया था दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर रोलिंग इन मनी दे हैव अर्न्ड ह्यूज प्रॉफिट्स दे आर स्विमिंग इन एक्सेस प्रॉफिट्स कितना प्यारा एक्सप्रेशन है लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये नहीं थी दैट दे वुड काइंड ऑफ लेवी अ लॉट ऑफ टैक्स ऑन देम सो दैट वो जो भी पैसा कमा रहे हैं एक्स्ट्रा वो उससे पैसा लेकर डेवलपमेंटल पर्पज में लगा दे वो नहीं था बल्कि बिजनेस को और आगे बढ़ाना रेगुलेशंस जो है
वो बर्डनसम हो जाते हैं कभी कभी. सो द गवर्नमेंट्स फोकस would be to ease the burden of regulation and to goad the private sector. Now, there's a wonderful word, goad. What is to goad someone? Goad करना थोड़ा सा prod करना होता है, जो हम थोड़ा सा नच देते हैं ना किसी को, to stimulate the person so that the person is able to act in a particular direction. Fine. So आप जब उसको हल्का सा एक पुश देते हो, आप चाहते हो कि वो कुछ काम करे, कोई भी इंसान, उसको मोटिवेट करना, उसको एनकरेज करना, वो गोड करना कहते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर को गोड करना है सो दैट दे कैन क्रिएट जॉब्स. तो जॉब क्रिएशन इज गोइंग टू बी द फोकस नाउ, राइट? ओके. Business must lead the march to Viksit Bharat 2047, and the job of the government is to persuade the private sector not to shy away from leadership. So the point here is very clear that, business and all these companies, big business houses, they have to lead the march, है ना? Lead the march मतलब इनको ही आगे बढ़ाना है. They have to be at the front line. विकसित भारत जो विजन है, डेवलप्ड भारत, उस पे ये क्या होंगे? They are going to be the the front line people. Fine. Okay. Persuade करना है प्राइवेट सेक्टर को कि वो लीड लें इस चीज में. They should march ahead. No PRX. Goad is not manipulation. ये मैनिपुलेशन नहीं है. ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट्स अ काइंड ऑफ अ नज. जैसे कि हम किसी को कभी गुस्से से annoy कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ये करो ना, ये करो ना, ये करो ना, that's goading. So you are actually pushing or motivating somebody to act a particular way, to motivate someone, right? Or to create situations so that वो एक particular direction में आगे बढ़े. All right. Outside government, speculation was rife on two matters. Now, this is a very interesting expression, rife. कोई चीज rife है, तो इसको भी समझते हैं हम. You must have heard this expression a number of times. Rumors were rife that. Fine. Yeah, it's a mix of forcing and encouraging or stimulating. It's a mix of the two. कभी कहते हैं ना थोड़ा सा भी नज देना होता है, कभी हल्का सा आगे बढ़ाना होता है. ओके PRX. It's Yuvraj, this class is essentially for improving your reading and vocabulary. But then we take up the editorials, okay? उससे आपको एक added advantage मिल जाता है that you get to know about what is happening around the world. But the focus of the editorial analysis that I take up is certainly not building up your general awareness. वो तो it comes as a byproduct, it comes as an advantage. But focus है language पे, है ना? तो कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी हो, जहां जहां इडियम्स या कुछ ग्रामर के अच्छे यूसेज मिलते हैं, वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं. दैट्स द ऑब्जेक्टिव, राइट? एंड वेलकम. इट्स योर फर्स्ट टाइम हियर, वेलकम. सो स्पेक्यूलेशन वाज राइफ. राइफ क्या होती है? कोई चीज विच इज वेरी कॉमन, विच इज वेरी अबंडेंट, विच इज प्लेंटीफुल. बट मोस्टली हम नेगेटिव चीजों के साथ में इसको यूज करते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, रूमर्स वर राइफ. तो स्पेक्यूलेशन क्या होता है? जब आप गेस कर रहे हो ना किसी चीज के बारे में, और सोच रहे हो बैठ के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज स्पेक्यूलेशन. सो आउटसाइड गवर्नमेंट स्पेक्यूलेशन वाज राइफ ऑन टू मैटर्स. दो चीजों पर बहुत चर्चाएं हो रही थी और बहुत डिस्कशन हो रहा था. क्या? व्हाट वर दोस टू थिंग्स? नंबर वन, the first concerned the possible response of the NDA to the signal from the parliamentary election that the strategy of sidestepping core economic problems, varying from rural distress and widespread unemployment to inflation, especially food price inflation, could prove costly. अब हम ये देखना चाहते थे कि रिस्पॉन्स क्या आएगा एनडीए से, क्योंकि एनडीए को इलेक्शंस जो अभी हुए हैं, जो recent elections हुए, NDA has got a very clear indication that since they sidestepped core economic problems, okay, that's why they got a very underwhelming mandate from the public. So people wanted to see what is going to be the reaction of NDA now after getting a setback in the parliamentary elections that were conducted recently, though NDA has come back to power, but then it's a coalition government, right? So what lessons have they learned? Fine. And why did this happen? Because they had constantly sidestepped core issues. जो main issues थे, जो मुद्दे थे, वो क्या थे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रूरल डिस्ट्रेस
happens to continue. So all these things NDA did not tackle them smartly last time. So what is going to be their reaction to it this time? Okay, the second related to the scale and the structure of the payoff to allies. Second very interesting thing was कि हाउ डू दे हैंडल देयर अलाइज, अपने अलाइज को ये किस तरीके से हैंडल करते हैं. पीपल वर क्यूरियस टू नो, राइट, व्हाट्स गोइंग टू बी द स्केल, कितनी पावर देते हैं, कैसे उनको सॉप्स देते हैं. द तेलुगु देशम पार्टी एंड द जनता दल यूनाइटेड from Andhra and Bihar, respectively, who are crucial to keep the post election coalition government led by the minority NDA in power. So, these people are definitely very, very crucial. Okay, they are crucial for the coalition government. Okay, and इनको ये किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं और क्या पोर्टफोलियो देते हैं. This was interesting. People were speculating about it. Initiatives and their slotting. अब यहाँ पे क्या initiatives हुए? The speech did not disappoint by sidestepping these issues. Though the beneficiaries of the schemes meant to address them are likely to be disappointed by their scale and efficacy. Now, very interestingly, speech जो थी वो तो it did not sidestep these issues. तो हर बार की तरह साइड स्टेप, साइड में हटा देना मेन मुद्दे को, है ना, और दूसरी दूसरी बातें करना. इसमें मैं आपको एक बहुत प्यारी इडियम बताना चाहूंगी आज, रेड हेरिंग. व्हाट इज अ रेड हेरिंग? रेड हेरिंग वो होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन दैट डिस्ट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम द मेन इशू, है ना. तो इतनी सारी बातें गवर्नमेंट और उनके मीडिया लेके आते रहे without actually addressing the core economic problems. So they came up with red herring, many of them, है ना. तो रेड हेरिंग मतलब एक डिस्ट्रैक्शन करना, जनता को मेन मुद्दे से भटकाने के लिए, उसको हम रेड हेरिंग बोलते हैं. ठीक है. सो the speech did not disappoint people because they addressed the core issues, but the beneficiaries of the schemes may not be very happy with the efficacy. करने की कोशिश करी है कुछ अच्छा, बट वो जो जो तरीका है वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, एंड सो इट वोंट बी सैटिस्फैक्टरी. ओके. Embarrassed perhaps by the hordes applying for the few half decent jobs available, party of the budget speech spent much time on the means to increase employment, especially for the educated unemployed. Now of course थोड़ी embarrassment इनको भी हो रही है कि there are hordes of people. What is horde? होर्ड इज अ क्राउड, बहुत ज्यादा, यू नो, जो क्राउड होती है उसको होर्ड बोलते हैं. सो देयर होर्ड्स ऑफ पीपल जो लिमिटेड जॉब्स को के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो यू नो द पार्ट ए ऑफ द बजट स्पीच वाज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए. Multiple initiatives were announced which broadly fell into two buckets. Now let's understand there are two buckets, there are two categories, okay, जिन पे बात हो रही है. One contained schemes that amounted to providing employment subsidies either directly or indirectly to employers. अब employer को हमें क्या करना है, जो गवर्नमेंट ने जो सोच के ये स्टेप उठाया है, that we have to facilitate employment generation. They have to foster employment generation, right? So employer must come up with more and more jobs. तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? They are providing subsidies. Subsidy तो आप सब समझते ही हो, right? तो कई एसेंशियल चीजों पर, एसेंशियल सप्लाईज पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी रहती है. तो अगर एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज की बात करें तो वो आगे फर्दर डिस्क्राइब्ड है. सो आई डोंट वांट टू रिवील द कार्ड्स राइट नाउ. लेट्स रीड एंड एक्सप्लोर दिस, राइट. So directly or indirectly employers को कोई ना कोई सब्सिडी मिलेगी. The scheme to provide 15,000 rupees in 3 installments to all new employees with salary up to 1 lakh a month appears to be directed to those employed in the formal sector. But the point here is कि ये जो चीज है ना, एक स्कीम उन्होंने लेके आई है कि 15,000 जो रुपए हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे टू ऑल न्यू एम्प्लॉयज. वो एफिकेसी है, वो कभी कभी जब हम इसको कॉपी करते हैं तो ये मिस्टेक हो जाती है. ओके, इट्स एफिकेसी which means efficiency. Okay, PRX, I hope it's clear now. All right. So this was talking about this 15,000 हम ऑफर करेंगे installments में with two, you know, all new employees with salary up to 1 lakh a month. लेकिन ये फॉर्मल सेक्टर जो होगा उसी में हो सकता है. एंड वी नो दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड दे वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ दीज बेनिफिट्स.
but it is more than likely that the availability of this benefit would influence the compensation package offered by companies attempting to internalize that subsidy. Now, these companies are would obviously try to internalize the subsidy. They would try to gain subsidy as much as possible, and thereby they will play with the compensation package in such a way that the benefit would be accrued by the companies and not by the employees. तो कहने का मतलब ये है कि कंपनीज उसमें भी झोल कर देंगी. तुम बस इतना समझो, डोंट गेट इनटू द मैथ्स बिहाइंड इट. बस इतना समझो कि इसको कंपनीज मिसयूज कर सकती हैं. कंपनीज हो सकता है सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वो चीज करें, एंड इसका बेनिफिट बेचारे एम्प्लॉय को तो उतना मिलेगा ही नहीं. Another set of subsidies, such as the 3,000 rupees a month contribution for 2 years to be made by the government against provident fund subscriptions, accrues directly to employers. दूसरी भी जो सब्सिडी है वो एम्प्लॉयर्स को ही मिल रही है, उसका भी फायदा. Okay. A second bucket consists of schemes varying from subsidized internships and interest subvention for educational loans, which attempt to skill workers largely at state expense in ways that are expected to make them more employable. अब ये interesting चीज है. क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? आई टेल यू. यहाँ पे नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू सब्सिडाइज, हम इसको क्या कहते हैं? स्किल एनहांसमेंट या स्किल डेवलपमेंट. तो वो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे फील दैट देयर इज अ स्किल मिसमैच. ओके, दे आर ट्राइंग टू मेक पीपल मोर एम्प्लॉयबल. तो इसीलिए they are providing skills at state expense. Now, this is going to be heavily subsidized. They will be providing educational loans even more readily, ताकि जो जनता है वो skilled हो पाए. The assumption is that it is not inadequate and inappropriate growth, but a skill set mismatch between what job aspirants have to offer and industry needs that is responsible for unemployment. तो अब यहाँ पे ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे फील दैट देयर इज अ गैप. देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट द एम्प्लॉयर वांट्स, व्हाट इज नीडेड बाय द एम्प्लॉयर, एंड व्हाट skills the candidates have, and there is a mismatch. Okay, what they have is way less than what is needed. So upskilling the people is going to actually help this process, right? तो वो ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं बन रही हैं. जॉबलेसनेस इसलिए है, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है. सो दे आर ट्राइंग टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ पीपल. Combine this with direct tax concessions for foreign firms and indirect tax adjustments to favor domestic manufacturing, and the picture that emerges is that the unemployment problem is sought to be tackled by persuading private capital with transfers to hire the unemployed in productive jobs. Coupled with these schemes, which are directly or indirectly helping in generating employment, coupled with that, there are also direct tax concessions to foreign firms. If foreign firms feel welcomed here, अगर उनको tax rebate मिलेगा या waiver मिलेगा, तो obviously they would be setting up their offices here, their plants here, thereby generating more employment and facilitating jobs, right? Also adding to the economic growth. एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं जिससे वो फ्लरिश कर सकते हैं. ओके, और ये जो एक्सप्रेशन है परसुएडिंग प्राइवेट कैपिटल विद ट्रांसफर्स, ये ट्रांसफर की क्या बात है? वो जो सब्सिडीज जो कह रहे हैं ना उसको ट्रांसफर कर रहे हैं. तो वो क्या करेंगे? प्राइवेट जो कैपिटल है, मतलब जितने भी अपने कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं. फैसिलिटेट करना मतलब एक तरह से उनको एनकरेज कर रहे हैं ताकि वो अनएम्प्लॉयड लोगों को अच्छी प्रॉपर प्रोडक्टिव जॉब्स दे पाए. तो दैट इज द objective behind coming up with all these provisions in the budget. The underlying perception which misses why high growth does not deliver more jobs is that business wants to hire but finds the available labor force too expensive or unsuited skill wise. तो उनका perception, जो underlying perception है, वो ये है कि हाई ग्रोथ होने के बावजूद भी जॉब्स क्यों नहीं मिलती? बिकॉज बिजनेस वांट टू हायर,
They want to hire people, but they're not able to find the right talent, or they feel that this is too expensive. This mismatch between the problem at hand and what the budget offers is even more stark when it comes to agriculture. अब agriculture में भी उन्होंने क्या किया, ये mismatch जो है कि problem क्या है versus the solution that we are offering. This is even more stark. Stark क्या होता है? Something which is very marked by a lot of contrast. Stark contrast. Stark मतलब glaring. ओके, तो ये मिसमैच और भी ज्यादा स्टीप है, शार्प है, डिवाइडेड है, ग्लैरिंग है इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्या किया उन्होंने, देखते हैं. while peasants unable to make both ends meet, peasants कौन होते हैं? farmers. Because crop production is economically unviable, have been demanding procurement at a legally guaranteed minimum support price. हम सब जानते हैं, these farmers have been ranting for MSP, minimum support price. So while the farmers they felt that यार ये तो growing these crops is very unviable and we must get a guaranteed minimum support price from the government. Okay, they must procure our crop. They must promise us that they will buy our crops at some minimum support price. The budget promises to implement a long-term program to raise productivity and production. तो वो long-term program बता रहे हैं कि भैया production तुम्हारा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा. बट ये समझो कि उनका मुद्दा क्या है, हम प्रोड्यूस तो कर ले बट आप खरीदोगे क्या, और आप उसको मिनिमम प्राइस पे खरीदोगे क्या, ये उनका मेन कंसर्न है. तो उस पे उन्होंने कोई भी कुछ भी नहीं किया. दे हैव नॉट एड्रेस्ड इट. यू गेटिंग मी राइट? ओके. Farmers who have been on the streets for years now are unlikely to be impressed. अब ये जो भी कर रहे हैं to bolster agriculture, this is not going to impress the farmers. What the key allies have got? अब quickly देखते हैं key allies को क्या मिला. थोड़ा लेंदी तो है, quickly देखते हैं. Disappointment is likely to be greater among NDA's allies. JDU in Bihar has been promised a combination of sundry transport, power, education, sports, and religious tourism infrastructure as an implicit quid pro quo for political support, which is a far cry from the large sums that it was expected to receive if granted the special status it demands, but has been denied. Very interesting. अब यहाँ पे कुछ बहुत प्यारे phrases आए. पहले तो मतलब समझ लो कि जेडीयू जो था, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय है उनका, उनको जैसी बातें बताई गई थी और उन्होंने जितनी चीजें उम्मीद की थी उस हिसाब से उनको नहीं मिली हैं. उनको कुछ मिसलेनियस टाइप की चीजें मिल गई हैं, अलग अलग टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बातें. तो वो इतना उनको खुश नहीं करेगा. Okay, this is what it means. And there are some really nice expressions coming here. Quid pro quo. What is quid pro quo? Something for something. Literally इसका मतलब होता है something for something. कहने का मतलब it simply means an exchange. Barter system. I give you something in return for something that you will give to me. So this is quid pro quo. Is this much clear? Secondly, वो क्या बोलता है? Far cry from. जब हम कहते हैं it's a far cry from, आप सिर्फ far को याद रखना, मतलब this is very different from. The final plan is a far cry from the initial outline of the plan that we had decided in the meeting. तो जो फाइनल प्लान था वो तो आपने क्या कर दिया, बहुत ही चेंज हो गया. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम, इट्स वेरी लाइक बहुत दूर है, इट्स पोल्स अपार्ट. ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना मिल नहीं रहा. टीडीपी हैज बीन ऑफर्ड सपोर्ट टू बिल्ड इट्स न्यू कैपिटल एट अमरावती, on which Chief Minister Chandrababu Naidu has staked his prestige and fortunes. But what is shocking is that these promises have not been backed up by significant financial support from the center, with much or almost all of the spending to be financed with borrowing, especially from the multilateral development banks, MDBs. ठीक है, तो अब मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो. राइट? बेटर, बेटर आई गेस. सो व्हाट इट्स सेइंग, और टीडीपी को ऑफर किया गया कि भैया तुम अपना न्यू कैपिटल बना लो अमरावती पे, एंड दिस वाज वेरी मच टाउटेड एंड पिच. लेकिन इसके लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा एमडीबी से.
एमडीबी क्यों सुनेंगे एनडीए लीडर्स को, ये क्लियर नहीं समझ में आ रहा, और अगर वो करेंगे भी तो दिस विल इंक्रीज द डेट बर्डन ऑफ दी स्टेट्स ऑब्वियसली, राइट? मोर ओवर गिवन द रिस्ट्रिक्शंस that have been placed, just a second, थोड़ी सी alignment, okay, that have been placed on borrowing by the state. It's unclear how debt for these purposes could be additional to what the state may have in any case chosen to incur. तो यही कह रहे हैं कि अगर वो करेंगे भी तो फिर उनके लिए वो एक बर्डन हो जाएगा, पूरे स्टेट के लिए वो बर्डन हो जाएगा. Preoccupied with propaganda aimed at concealing, conceal is to hide, the little that has been done in these politically sensitive areas, the government in its first year in power has chosen to completely ignore the welfare schemes it made much of in the run up to the election. तो run up to the election मतलब जब वो election के लिए जा रही थी, जब वो अपनी canvassing कर रही थी, at that point of time they were pitching so much about the welfare schemes कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, but वो welfare schemes को उतना coverage नहीं मिल रहा है, वो somehow side track हो गई हैं. Thus, total expenditure for this program covering pensions and disability benefits, which stood at ITNA in 23-24, has been allocated exactly the same amount in the budget for 24-25. So there is no increase in the allocation for this particular welfare scheme. जितना last time था उतना ही अभी भी है. That is the fate of the National Rural Employment Guarantee Program as well, where the allocation for this is exactly the same as the revised estimate for expenditure in this. तो allocation इसका भी बड़ा नहीं है National Employment Guarantee Program का. Despite the extension of the free food grain allocation under the National Food Security Act, the food subsidy is budgeted to fall from this to this much. अब देखो इस पूरे पैराग्राफ में वो क्या बता रहे हैं, दे टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर स्कीम्स, कि वेलफेयर स्कीम्स में एलोकेशन बढ़ना चाहिए बट नहीं बढ़ा है. एंड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वहां पे फूड सब्सिडी बढ़ना तो दूर है बल्कि गिर गई है, राइट? इट्स अ वेरी वेरी मेजर ड्रॉप, okay, in the food subsidy. It's only in the case of Pradhan Mantri Awas Yojana that there is evidence of backing grandiose statements in the budget with some increase in allocation. So only PM Awas Yojana में थोड़ा allocation बढ़ाया गया है, बाकी सब में एक तरह से कम ही हुआ है, नहीं तो stagnant है. The secret source of funds, अब मुद्दा ये है कि इतने funds आएंगे कहाँ से? So is there any larger ambition reflected in the budget? There are two elements that stand out. One is the obsession with fiscal consolidation, with the fiscal deficit expected to come down from ITNA to ITNA 4.9 to 4.5 this year, and a promise of staying on that path subsequently. So what we understand that fiscal deficit को कम करने में लगी हुई है सरकार, which is a very good thing, and you can clearly see that obsession because fiscal deficit थोड़ा कम तो हुआ है, okay, this year 4.9 से 4.5 आ गया. फिस्कल डेफिसिट आप जानते हो सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस होता है. सो अगर डेफिसिट है तो हम थोड़े से गड्ढे में जा रहे हैं. फाइन, ऑलराइट. So I hope इतना तो आपको पता होगा. The other is the claim now made every year that the BJP-led government is taking capital expenditure to new heights, especially on infrastructure. तो सेकंड वो जो क्लेम कर रहे हैं, लाउडली एडवोकेट कर रहे हैं और पिच कर रहे हैं अपनी बजट उसमें, वो ये है कि दे आर नाउ इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर, दे आर गोइंग कैपिटल हेवी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. Capital expenditure that rose from itna to itna in this is budgeted to rise further to itna, right? I'm just saying itna because I don't want to read those lambi amounts. That's not going to, like, I am not fixated with facts. I am here emphasizing on ideas. ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि अब कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑन द राइज, दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. Fine, and that is what they are advertising a lot. With tax revenues not expected to register any special buoyancy. Buoyancy क्या होती है? बेसिकली तो buoyancy होता है, हमने जो साइंस में पढ़ा था, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फ्लोट. तो फ्लोटिंग एबिलिटी होती है buoyancy. You put something in water and it will float. फाइन, बट इन जनरल बॉयंसी जब हम कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि यू आर बीइंग, यू नो, डिस्पाइट द सेटबैक्स यू आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक. तो आप थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो एंड डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, एक फीलिंग है कि चीयरफुलनेस की फीलिंग है, रेजिलियंस की फीलिंग है, उसको कहते हैं. तो टैक्स रेवेन्यूज तो हमारे उतने होने नहीं वाले.
तो फिर ये टारगेट्स हम कैसे अचीव करेंगे? The well-known secret source is once again dividends and surpluses from the RBI and leading public financial institutions, which have risen from itna to a huge itna, right? And are budgeted to spike again. Spike again. What is spike? Spike का मतलब होता है a sharp increase in something, right? Spurt, hike, spate. Okay, ये सब होता है spike. But even these funds garnered through transfers within the state are not available for welfare spending or meaningful support for allies on whom the government depends. अगर ये है भी तो ये चीजें अलाइज पे स्पेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ये जनता का पैसा है, ओके, और ये आपको आरबीआई और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो परफॉर्म्ड वेल, ये उनका पैसा है। सो दीज फंड्स कैन नॉट बी used in such a manner even for welfare spending because they can be state specific also. Prime Minister Narendra Modi and his advisors have either not learned their lessons or believe there's none to be learned. Now, the final sentence, the concluding sentence is really acerbic, is very critical. तो सब बोलने के बाद में वो फाइनली ऑथर कहते हैं कि या तो इनके एडवाइजर्स ने और पीएमजी ने सीखे नहीं कोई लेसन, या फिर उनको लगता भी नहीं है कि कोई लेसन हमको सीखने की जरूरत है। ओके, सी ग्रैंडियोस का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज लाइक रियली वेरी पॉम्पस एंड ग्रैंड। ओके, ग्रैंडियोस, ठीक है, ग्रैंड से याद रखिए, ग्रैंडियोस सिंपली वही मतलब होता है। सो इट्स टाइम टू मूव टू आर प्रेजेंटेशन, जहां पे हम थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा और डिटेल में करते हैं। नो साइंस ऑफ लर्निंग, इसमें हम फटाफट क्या करने वाले हैं, क्विकली वी विल गो थ्रू द मेन आइडिया, ठीक है। The union budget focuses on incentivizing private sector led job creation through tax breaks and subsidies while neglecting core economic issues and welfare schemes, potentially disappointing key allies and vulnerable populations. तो the union budget ने focus क्या किया है जॉब जनरेशन पर थ्रू टैक्स ब्रेक्स एंड सब्सिडीज, बट कुछ कोर इकोनॉमिक मुद्दे थे जैसे एग्रीकल्चर को कैसे टैकल करना चाहिए, राइट, वेलफेयर स्कीम्स के जो एलोकेशंस है वो हो गए, और इवन अलाइज के लिए जो जो एलोकेट किया है वो सब जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। टोन इज थ्रू एंड थ्रू क्रिटिकल, स्पेशली जब आप उसकी हेडिंग ही देख लेते नो साइंस ऑफ लर्निंग, तो काफी काफी स्ट्रांगली क्रिटिकल टोन नजर आती है, वेयर द approach of the government has been criticized. Domain या genre economic critique, critiquing, analyzing and then finding loopholes in something. Okay, all right. These are the key points. सबसे पहले introduce किया है ना कि जो budget था coalition की priorities, it was expected, or and this was focusing on easing business regulations rather than taxing excess products. Speculation outside government. Royal Star, are you talking about the English subject? English subject के मार्क्स हैं ये आपके काफी कम है, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन आउटसाइड गवर्नमेंट की बात हो रही है कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स वर स्पेक्यूलेटिंग कि एनडीए कैसे एड्रेस करेगा इन सारी चीजों को। फिर एम्प्लॉयमेंट जो इनिशिएटिव्स थे, जो 2 टाइप की स्कीम्स थी, उनको बता रहे वर्बल सेक्शन में मार्क्स बहुत कम है बेटा, ठीक है। ड्रॉप आपने एक ड्रॉप आप ले सकते हो फॉर दिस एग्जामिनेशन, बट सेकेंड टाइम ड्रॉप मैं सजेस्ट नहीं करती। सो इफ यू वर इन 12th देन यू कैन टेक अ ड्रॉप, यू, बट अदरवाइज डबल ड्रॉप नो। स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में बात हो रही है, किस तरह से जो स्किल्स चाहिए कंपनीज को, बिजनेसेस को, और जो स्किल्स है लोगों के पास में, देयर इज अ मिसमैच एंड सो स्किल अपग्रेडेशन होना चाहिए। टैक्स कंसेशंस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, किस तरह से टैक्स एडजस्टमेंट्स हो रहा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए, और फॉरेन कंपनीज को वू करने के लिए व्हाट कंसेशंस आर बीइंग डोल्ड आउट। ओके, वो पूरी बात है। एग्रीकल्चर में इट्स डिसअपॉइंटिंग, the long term productivity programs are not going to appease the farmers. Allies are also likely to be a little disappointed with what has been offered to them. Welfare schemes, the allocation remains very limited.
Okay, and it's telling you about the different welfare schemes and how it has almost remained stagnant. Fiscal consolidation, the focus seems to be only on, working out the fiscal deficit in a better way, which has actually happened, है ना? And there are questions about raising funds. What are going to be the funding sources? Because they are going to rely on RBI and public financial institutions and their earnings. Final conclusion that the government has not learned from past mistakes and they must prioritize fiscal consolidation. It continues to prioritize fiscal consolidation over meaningful support for welfare schemes and political allies. Vocabulary vortex, some really nice words have been cherry picked. Let's quickly go through them. Underwhelming, I've explained all the words that came, all the nice words, I've already done that with you. So we will quickly breeze through these. Something that fails to impress or meet expectations, underwhelming. Okay, the performance of India in Olympics was underwhelming. Synonyms, mediocre, unremarkable, lackluster. Lackluster is something which is very dull, okay, which lacks the luster or shine. Disappointing. Goad, to motivate, stimulate someone to act. The teacher goaded the students to improve their vocabulary. I always do that, yeah. Synonyms, prod, spur, foment, stimulate, urge, encourage. Centerpiece भी एक वर्ड भी आया था आई गेस. तो सेंटर पीस में उन्होंने बोला था कि किस कॉन्टेक्स्ट में आया था मुझे याद नहीं. हाँ, सेंटर पीस ऑफ द बजट वॉज, तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट आइटम इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो बजट प्रेजेंट हुआ उसमें उसकी ऑफरिंग्स में सेंटर पीस क्या था, सबसे स्ट्राइकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी. द सेंटर पीस ऑफ द न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वाज बिजनेस एक्सपेंशन. सिनोनिम हो जाएगा फोकल पॉइंट, न्यूक्लियस, सेंट्रल हाईलाइट, एसेंस, एपिटमे. Take a screenshot, class, learn these words, include them in your vocab diary. Quid pro quo, something for something. It's a mutual exchange of goods or services. Their agreement was a quid pro quo, funding for a favor. You favor me through whichever ways, and I will give you funds. So, this is a give and take kind of a situation, a quid pro quo. Barter, exchange, reciprocity, trade off. Buoyancy, ability of a body to float, लेकिन in this context, ability to stay positive, resilient, cheerful despite challenges or difficulties, right? Buoyancy in the share market, मतलब अब we are being optimistic, है ना? We are being bullish, हमें उम्मीद है कि scenario better हो जाएगा. The buoyancy of the new economic policies was evident in the rising confidence of investors and the growth in market activity. Synonyms, flotation, optimism, ebullience, lift. Rife, commonly found or widespread. Widespread. When something is very rampant, it's commonly found. Often used to describe something undesirable or problematic. Mostly मैंने बोला था negative way में ज़्यादा use करते हैं. The city was rife with rumors about the political scandal. Synonyms, ubiquitous. When something is very, very, prevalent and rampant and all around us, right? That is ubiquitous. Abundant, widespread, plentiful. Okay. And class, I don't want to take up the next one. Rather, I would say the thank you because I've exceeded the time limit already. एंड आई होप आपको ये आर्टिकल पढ़ के ही बजट की कुछ अच्छी अच्छी हाइलाइट्स मिल गई होंगी, उसका एक एनालिसिस अच्छा मिल गया. इट वाज अ नाइस इकोनॉमिक क्रिटिक और अ कमेंट्री ऑफ द बजट, नाइस रिगरस एनालिसिस. हर्षित राइट्स दैट आरसी एक बार में क्लियरली समझ नहीं आते, बीच में ही लिंक टूट जाता है. हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस? ओके, इसीलिए तो हम आपको ये रीडिंग एक्टिविटी करा रहे हैं बेटा. इसीलिए तो आई एम इवन कमिंग अप विद these highlights of mind mapping. When you read, Harshit, try to understand, try to assimilate, है ना? Don't go with lofty words. You just try to think कि यार ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है, इस पूरे पैराग्राफ में इसने क्या बोला, क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, बस उनको दिमाग में बिठाना होता है. Yeah, you can definitely. This was the second article, a convoluted approach to job creation. You can take screenshots.
The government's job creation strategy, relying on wage subsidies and skill development, is criticized as short term and misaligned with real economic conditions. जो अप्रोच उन्होंने जॉब क्रिएशन की करी है, जो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं, अनदर रीजन व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस इज लाइक ऑलरेडी वो कवर हो ही चुका है एक तरह से, तो उसको आप पढ़ जरूर लेना, द सेकंड एडिटोरियल, आई एम श्योर इट ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। दैट इज सेइंग दैट दिस स्ट्रैटेजी जो है, वेज सब्सिडीज और स्किल डेवलपमेंट, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है और ये अलाइंड नहीं विद द रियल इकोनॉमिक कंडीशन। थोड़ी स्केप्टिकल टाइप की टोन है, मतलब डाउटफुल है, ऑथर को लग रहा है कि यार ऐसे ऐसी अप्रोच से क्या कुछ हो पाएगा, है ना। द ऑथर डाउट्स एंड ही फील्स कि शायद कुछ ना हो पाएगा इससे। दिस इज इकोनॉमिक एनालिसिस एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एकदम सुपर ब्रीफ में आपके लिए, ठीक है। So you can take the screenshot, you can read the passage, you can tally it with these important points. I hope you have taken the screenshot already. And I'll catch you tomorrow, same time. And keep reading, keep working on your vocabulary, right? Dilli dur nahi hai, tumhari success dur nahi hai. You will definitely get what you want, but you have to be very, very hardworking and perseverant. Okay, so signing off. Thank you so much. Bye bye. Take care.